students, and I'm back with another topic for the students of Punjab history and culture. And this time, the topic is the Aryans, who were Aryans, and the theories of their origin. So let's know more about Aryans. All right. Now, Aryans are believed to have come and settled in Punjab, right? क्योंकि हम पंजाब हिस्ट्री की बात कर रहे हैं सो आर्यंस जो हैं हम लोगों ने रेशियल कॉम्पोजिशन में मैंने आपको बताया था कि कुछ भी हम रेसेस पंजाब की बात करें लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आर्यंस इफ़ they came in India and the first place they settled that was Punjab. Although we are not aware or we do not know about the original home of the Aryans. So Aryans के बारे में जितनी भी हमारी knowledge है that is just based on Rig Ved, which is the oldest book in the library of man. So what does the word Arya means? The word Arya means, let me have my pointer. Okay. The word Arya means noble, right? Respected, highborn, cultured. So Aryans were brave, daring, highly developed people. They were far ahead of other races of the time. अगर मैं उनकी physically built की बात करूं, they were fair, physically tall, well built, strong, and good looking people. All right. So, what are the various theories of origin? Where did they come from? Now, one theory is the theory of Sub-Sandhu. The other is the theory of Tibet. Then the theory of Arctic region. The theory of Austria-Hungary. The theory of Central Asia. Right. So, this question comes to your in your exams. Who were Aryans and give various theories of their origin. क्योंकि बच्चे exactly speaking we have no idea where these Aryans actually came from. So there are different theories based on different sources, conclusions, but of course the main source was the Rig Veda. So number one theory, let me have my pointer here so that will be a little more easier for me. Yes. All right. So first is the theory of the Sapsandhu. Now, if you remember my first lecture where I talked about the physical features of Punjab, I told you various names which were given to Punjab, and during the time of Vedic age, Sapt Sandhu was the name which was given to Punjab. So this theory of Sapsandhu, this has been given by Dr. A.C. Das and Dr. Sampuran Anand. अब ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि आर्यंस बिलोंग टू सब संधु और द पंजाब एरिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजंस इन सपोर्ट. नाउ नंबर वन, Vedas do not mention any other place as the home of the Aryans. So अगर Aryans बाहर से आए हैं, so obviously Vedas would have mentioned it, but nothing has been mentioned in Vedas that wherever if they have come from the outside Punjab. Then the physical features in the Vedas are the same as in the Sub-Sandhu areas. But there are certain historians who do not support this. They say that if you say कि Aryans हमेशा से पंजाब में थे तो पंजाब में तो यहाँ पर Indus civilization भी था. So they kind of try to, it's like a jigsaw puzzle that is it really possible that if Aryans came from Punjab, they were already in Punjab, but then Punjab already had a civilization by the name of Indus Valley civilization. दूसरा बच्चे, one thing is clear that these Aryans spread in Asia and Europe. लेकिन Punjab is not centrally located, so यहाँ से they would not have spread. All right. The other theory is the theory of Tibet, and that has been given by Swami Dayanand in his book Satyarth Prakash. Now, what are the theory that he says? He says कि Aryans जो हैं वो Tibet से आए थे. अब what reasons does he say? He says due to lack of evidence in the Vedic literature, and आप कहते हो सब संधु theory सही नहीं है, तो ऐसे लगता है कि they must have come from the area nearer to Punjab, and he feels Tibet could be that area. लेकिन जो रीजंस इनके सपोर्ट में नहीं है वो कहते हैं कि टिबेट थेरी जो है वो इनहेबिटेंट्स ऑफ टिबेट को आर्यन रेस के नहीं मानते हैं, राइट.
दूसरा बचे अगेन टिबेट वॉज नॉट अ सेंट्रल प्लेस जहाँ से ये आर्यंस वुड हैव स्प्रेड टू अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. The third theory. Now, this theory is called as the theory of the Arctic region, and this was given by Bal Gangadhar Tilak in his book The Ancient Home of the Aryans. उन्होंने यहाँ पर कहा है कि ओरिजिनल होम और क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन आर्यन सिविलाइजेशन सीम्स टू बी आर्कटिक रीजन. राइट, सो ये कैसे करते हैं? Now, what does he say? He actually came to this conclusion by a close study of two important books. One is the Rig Veda and Zend Avesta. राइट, फिर इन्होंने ये जो भी इसमें फ्लोरा एंड फोना प्लांट्स एंड एनिमल्स की मेंशन की गई है, ही एक्चुअली ट्राइज टू कंपेयर इट विद द एरिया दैट ही कॉल्स एज द आर्कटिक. सो देन ही होल्ड्स दैट हमारे इंसेस्टर्स जो हैं दे लिव्ड इन अ ट्रैक्ट बिटवीन द नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड द आर्कटिक सर्कल. But there are reasons which historians say that the theory cannot be true because अभी भी हम देखें with the advance of science it is not possible to live in this area because of extreme cold weather, right? So let's move on to these three theories. Let's quickly revise them. The first theory given by AC Das and Sampuran Anand, वो ये कहते हैं कि आर्यंस जो है सब संधु एरिया को बिलोंग करते थे. इसके रीजंस ये है कि वेदास में कोई भी कहीं और से वो आया इसकी मेंशन नहीं है. फिजिकल फीचर्स जो वेदास में डिस्क्राइब किए गए हैं वो बिल्कुल सब संधु के हैं. जो ये रीजंस नहीं सपोर्ट करते वो ये कहते हैं कि पंजाब में तो इससे पहले इंडस सिविलाइजेशन था, तो क्या रियली ये यहीं के रहने वाले थे? और फिर आपका जो है पंजाब के नॉट बी अ सेंट्रल प्लेस जहाँ से ये लोग जो हैं एशिया एंड यूरोप में चले गए होंगे. देन द थेरी गिवन बाय स्वामी दयानंद दैट दे केम फ्रॉम टिबेट, वो कहते हैं कि अगर आप सब संधु थेरी निगेट करते हो दैट मीन्स दे मस्ट हैव कम फ्रॉम द एरिया नियरर टू पंजाब दैट सीम्स टू बी टिबेट. बट हम इसको नहीं सपोर्ट करते बिकॉज टिबेट के पीपल जो है दे डू नॉट बिलोंग टू आर्यन रेस एंड अगेन टिबेट कैन नॉट बी अ सेंट्रल प्लेस जहाँ से ये लोग चले गए होंगे. फिर हमने की थी बाल गंगाधर तिलक की कि दे केम फ्रॉम द आर्कटिक रीजन एंड ही टॉक्ड अबाउट दिस इन हिज एंशिएंट होम ऑफ द आर्यंस. Now is the theory of Austria and Hungary. Now this theory is given by Dr. P. Gills and MacDonald. Both are the European scholars. They opine that Aryans belong to Europe and not to Asia. So they feel that Aryans belong to Europe and not to Asia. So he says पूरा का पूरा Europe जो है they feel proud to belong to the Aryan race and particularly Central Europe, the Austria-Hungary that is shown as the original home of the Aryans. How do you prove this? Now they put forward the similarities of different languages, fauna and flora known to Aryans, but जो ये पॉइंट सपोर्ट नहीं करते. नंबर वन, द थेरी डज नॉट हैव दिस सेंट्रल सिचुएशन, मतलब दे शुड बी इन अ सेंट्रल प्लेस जहाँ से दे मस्ट हैव गॉन टू वेरियस एरियाज. अब ऑस्ट्रिया हंगेरी से आर्यंस कुड हैव स्प्रेड ओनली टू यूरोप, लेकिन एशिया रीजन्स में वो नहीं आ सकते थे. सो ये भी थेरी जो है दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड. So the most accepted theory is the theory of the Central Asia. Right now, इससे पहले क्या है, जितनी भी theories हैं, number one, their main source is Rig Veda, right? And number two, they are talking about the vegetation, the climate, right? So flora and fauna, climate. But यहाँ पर एक ऐसे German scholar आए, linguistic scholar जो language के scholar थे, who was Max Muller. He believed that Aryans belong to Central Asia. अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? Because he found that there is a close similarity of Sanskrit with the Greek, Latin, Persian, English and German languages. So he felt वो सपोर्ट कैसे करते हैं? ही सेज कि ऐसा लगता है कि इन लोगों के इंसेस्टर्स जो हैं दे माइट बी स्पीकिंग दीज लैंग्वेजेस, दे माइट हैव लिव्ड टुगेदर, बिकॉज ही सेज दैट देयर इज़ अ क्लोज सिमिलैरिटी between Sanskrit with Greek, Latin, Persian, English and German. So central place of these languages seems to be Central Asia. अब हम कुछ कंटेम्प्रेरी अगर मैं बात करें, सो द बेस ऑफ द थेरी इज़ रॉन्ग. इन USA वी हैव टू रेसेस, वी हैव वाइट एंड ब्लैक रेस, सो दैट इन इट सेल्फ नेगेट्स दिस थेरी.
लेकिन लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी द हिस्टोरियन स्टिल बिलीव दैट दिस सीम्स टू बी द मोस्ट करेक्ट थिंग. Why? Okay, number one, Central Asia was in the center of the Asia and Europe. So यहीं से ये Aryans spread किए होंगे. Number two, there is lot of similarity between Zend Avastha, the book of the Iranians, and Rigved, the scriptures of the Persians and the Aryans. The Persians, now in the modern day, we call them as the Iranians, right? So there is a similarity between Zend Avastha, जो कि ऋग्वेद की तरह पर्शियंस की किताब है, और आर्यंस की किताब ऋग्वेद है. सो लगता है कि दोनों के इंसेस्टर्स एक ही जगह पर रहे होंगे, दैट इज सेंट्रल एशिया. देर इज़ एन इंस्क्रिप्शन. मैंने आपको बताया था क्लास में भी इंस्क्रिप्शन क्या होती है. बेसिकली घड़ना, रॉक के ऊपर, पिलर्स के ऊपर. सो वी हैव गॉट दिस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम सेंट्रल एशिया दैट्स कॉल्ड एज द बोगजोय इंस्क्रिप्शन. सो इसमें जो है दे हैव टॉक्ड अबाउट देव टॉक दैट जो लोग यहाँ पर रहते थे दे वर्शिप द आर्यन गॉड्स इंद्र एंड वरुण. सो दैट मीन्स दिस strengthens the view that the original home of the Aryans was the Central Asia. Right? So I think this concept is clear now. So what we have covered is who were Aryans and what were the various theories of the origin of the Aryans. So this is all that I have for you this time, and very soon I'll be coming with the next video where I will be talking about the political, social, economic and religious life of the early Vedic Aryans. Have a great day today. Stay home, stay safe.